Okay. So we are looking at 5 gases. Components as 5. Now since they are in the gas phase, number of phase equal to 1. So now we need to find out what is the value of R. Right? So what we have done is we have written the reactions of formation of these compounds from its elements. ये 4 reaction लिखे थे हमने, because in this 5 components one is already an element form, right? The element here, so there are only 4 reactions to form these compounds from their elements, right? And then somebody had suggested कि हम combine करके कर सकते हैं minus reactions that we eliminate elements which are not present in the system. System में present elements, जो absent elements है कौन सा है? Which elements are not present in this system which are there in these reactions? Who can tell? 4 रिएक्शन में ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो ये 5 कंपोनेंट में से नहीं है? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? Carbon and oxygen. Carbon and oxygen. Carbon and oxygen, right? Because in this 4 reactions what you see is carbon है, oxygen है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट? यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ऑलरेडी, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन नहीं है. So these are the elements that are not present in this system, right? So we have to combine these 4 reactions in a way to eliminate carbon and oxygen, because our system does not have carbon and oxygen. So that is the first step we have to do, right? So हमने क्या किया? We can do it anyway. ऐसा कुछ नहीं, there is no unique way of doing it. So I just took 1 minus 2, right? 1 minus 2 reaction लिया तो carbon plus half O2 minus carbon minus O2 gives CO minus CO2, right? So that gives this thing, और उसको हमने rearrange किया तो what you get is CO plus half O2 gives CO2. ये normal reaction होता है, carbon monoxide plus oxygen gives CO2. So this is the equation 5 or reaction 5 you can say, right? Now what we need to do is we need to eliminate carbon. Eliminate हो गया हमारा, right? So we eliminate carbon. Now we need to eliminate oxygen. Oxygen कैसे eliminate कर सकते हैं हम? We can do anyway. यहाँ पर just मैंने लिया है 1 और 2 हो गया. So now we don't need to consider 1 and 2. एक बार ये हो गया तो then we are done with 1 and 2. फिर से नहीं करने की जरूरत है इसको. So now we'll take some other reaction from 3 and 4. So 3 लिया हमने, right? So it is CO plus half O2 gives CO2 and hydrogen plus half O2 gives H2O. So then what I've done is 5 minus 3. तो उसमें क्या हो जाएगा? CO plus half O2 minus hydrogen minus half O2 gives CO2 plus H2O. So half O2 cancel हो गया. What you get is CO minus hydrogen is equal to CO2 minus H2O, and we can combine it, rearrange it to give CO plus H2O gives CO2 plus hydrogen. ठीक है, इतना समझ में आया लोगों को? कैसे combine किया? You can do it anyway. You can play with these reactions and find out how to eliminate. Ultimate objective is to eliminate carbon and oxygen. किसी कोई डाउट है रिएक्शन 6 में? And this is one of अभी क्या हो गया? एक खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया हमारा. 1 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, राइट? सो अभी क्या बचा?
4 and 6. अभी 4 बचा, राइट? 1 2 3 हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया, राइट? अभी 4 बचा, राइट? 4 क्या है? राइट? अभी रिएक्शन 4 में कार्बन है, कार्बन हमको नहीं चाहिए. We don't want carbon because this element is not present in the system. तो कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको हम? How will you combine this with something else so that we get CH4? Because ultimately what we need is अपना 5 कंपाउंड थे, राइट? CO था, हमको मिल गया. वाटर था, मिल गया. CO2 था, मिल गया. हाइड्रोजन था, मिल गया. 4 कंपाउंड मिल गया हमारे को, राइट? आउट ऑफ दिस 5. अभी हमको CH4 चाहिए. वी नीड अ रिएक्शन in which CH4 is formed, and we need a reaction which does not have carbon. तो कैसे कंबाइन करेंगे 4 को? किसके साथ कंबाइन करेंगे टू गेट CH4? कुछ कर सकते हैं? एनी आइडिया? You can use any reaction. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यूज़ कर सकते हम. You can use any reaction to combine with 4. क्या? सर हम्म. सर एक बार यूज किए हुए रिएक्शंस वापस यूज कर हाँ, सकते कर हैं? सकते. You can use it. You can use it. You can use it. You can do anything. We have to just combine. We have to get CH4 in a reaction which does not have carbon and oxygen. कैसे करेंगे? आ रहा है किसी को आइडिया? सर 1 - 4 किया तो 1 minus 4. Okay, let's do 1 minus 4. What she's suggesting is 1 minus 4. 1 क्या है? 1 is carbon plus half water gives CO. Okay. If you do 1 minus 4, what you'll get is okay. So what we'll get is carbon carbon gaya. So what you'll get is half O2 minus 2H2 is CO minus CH4. Right?
तो what you can do is CO plus 2H2, इसको इधर लेके आए, इधर तो इधर CH4 प्लस हाफ O2। ठीक है, तो we get this as O2 आ रहा है। is that correct? O2 O2 एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा, वी हैव टू सी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्टेप में करने का अपने को। We don't have to do it in one step, we can do it in multiple steps. Ultimately what we need to get, we need to get a reaction which, or number of reactions which has all the 5 compounds in the given system. That's the objective. एक हमको मिल गया यहाँ पर, right? We already got one. Now we need one reaction which has CH4 and some other compounds without oxygen and carbon. तो कार्बन एलिमिनेट कर लिया, अभी ऑक्सीजन बचा। अभी ऑक्सीजन एलिमिनेट करने का, ऑक्सीजन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम? सर वो CO प्लस हाफ O2 वाला, हाँ, CO प्लस हाफ O2 वाला इक्वेशन। CO प्लस हाफ O2 वाला। ओके, लेट्स सी क्या बोलते हैं। CO प्लस हाफ O2 इक्वेशन 5। हाँ, इक्वेशन 5 क्या? रिएक्शन 5, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। लेट्स सी, आई डोंट नो क्या होने वाला है। लेट्स सी, CO प्लस हाफ O2 CO2। प्लस हाफ O2, ठीक है, ये सेम है, इसको इधर लेके आया सिर्फ, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज 7 माइनस 5, ठीक है, और प्लस 5, 7 प्लस 5, तो हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू गेट इज CO प्लस ट्वाइस H2 प्लस, ओ माइनस करेगा हमारे को ये, CO प्लस ओके, लेट्स सी, प्लस CO gives CH4 प्लस हाफ O2 प्लस CO2 माइनस हाफ O2, राइट। ठीक है, तो व्हाट यू गेट इज O2 गया यहाँ पर, तो व्हाट यू गेट इज ट्वाइस CO प्लस ट्वाइस H2 is CO2 plus CH4, ठीक है। तो दिस सपोज 8, ठीक है, डजेंट मैटर, ये इक्वेशन है, रिएक्शन मिल गया हमारे को। तो वी कैन से वी हैव, नाउ वी हैव रिएक्शन 7 नहीं 6 था ना, 6, ये 6 हमारे पास। सर 7 प्लस 3 से भी होता है। हाँ, 7 प्लस 3 in the 7 plus 3, let's see, okay, कहाँ गया वो 6 कहाँ गया, इधर 6, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, struggling for this now।
कॉपी करना था, टाइम ले रहा है बहुत, मच टाइम फॉर दिस सिंपल थिंग। ठीक है, लिख लेंगे वैसे ही कॉपी करके। एक्स क्या था, CO प्लस H2 O gives CO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो वी गॉट दिस 8 एंड दिस वाज 6। ठीक है, एंड 7 प्लस 3 क्या बोल रहे थे, वो सेइंग 7 प्लस 3। सर जो 7+5 किया वैसे 7+3 करके भी होता 7 प्लस 3 क्या है। यस सर। was and what is 3 hydrogen plus half water। so 7 plus 3 will be, ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज दिस, CO plus 5H2 this CH4 plus H2। ठीक है, दैट करेक्ट। यस सर। so we can take any of these, doesn't matter। See, ultimately अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि we need equations or reactions which have all the 5 compounds। we can take these or we can take 8 and 9, right, 6 and 8 और 6 and 9, राइट। 6 and 9 लिया तो CO है, CO2 है, H2O है, हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर 5 हो जाते हैं, इसमें 5 हो जाते हैं। सो ये अल्टीमेटली वी आर रिड्यूस्ड टू 2 रिएक्शंस। ठीक है, वी कैन टेक इट एनी वे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो अपने लिए क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, R इक्वल टू कितना रिएक्शन हो जाएगा, because now we have 2 reactions which have all the 5 components of the system and no other elements which are not present in the system। ऑब्जेक्टिव ये था हमारा, राइट। समझा क्या लोगों को? डजंट मैटर, दोनों करेक्ट है, both these are correct। 9 and 6 and 8 and 6 are both correct। So ultimately we have to find out 2 reactions or whatever and R reactions which will have all the 5 components of the system and no other elements। okay, so in this case, now if you proceed further, what you will get is so अभी C कितना है अपना, what is C equal to, number of components कितना था, hello, can you hear me? 5 sir। Number of components 5, number of phases 1 number of reactions 2
इस रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस, व्हाट विल गेट इज F is equal to F is equal to कितना आ जाएगा? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कैसे किया हमने, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इफ यू डू टेक 2-3 एग्जांपल एंड डू इट, you can easily understand what is the procedure. Anybody has any questions? कैसे ये आया? सर वो स्पेशल केस में खाली प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, स्पेशल केस में अपने को सोचना पड़ेगा ना क्या होगा स्पेशल केस। ठीक है, प्रॉब्लम आएगा, बट इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट ऑल्सो। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। और स्पेशल केस हमने एक देखा, राइट? और इसमें जनरली ऐसे रहेगा कि मोल फ्रैक्शन का ही रहेगा, जिससे हमने देखा था वो एज़ोट्रॉप में देखा था स्पेशल केस, राइट? वी नो एज़ोट्रॉप में वेपर कंपोजिशन इज ऑलवेज इक्वल टू लिक्विड कंपोजिशन। स्पेशल केसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर द स्पेशल केसेस। ये डिकम्पोज हुआ, अगर इक्वल अगर एक कंपाउंड डिकम्पोज करके दो कंपाउंड दे रहा है, दोनों वेपर फेज में है, तो दैट जनरल क्राइटेरिया यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई स्पेशल केस। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कैन डू इट। ओके, so let me give you another example, hopefully you can do it. इसमें ही है अपना नारायणन है आप लोगों के पास? यस सर। Everybody have Narayanan. So what you can do is you can try to solve Narayanan का problems 9.50 and 9.51. Try to solve these problems. I'll do it in the class, but try to solve it on your own to understand better ये D part कैसे apply करते हैं. It's related to D part only. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी कोई डाउट है, क्वेश्चन है? आज को किया हमने एक ही एग्जांपल किया हमने डी पार्ट, बिकॉज इट्स नॉट इजी, बट होपफुली यू अंडरस्टैंड इट कैसे करने का है। तो पूछ सकते हैं अभी। Sir, can we take all three equations? ऑल थ्री यानी Means 6, 8 and 9. जरूरत नहीं है ना, यू नीड सी अल्टीमेटली आर इज नंबर ऑफ, लेट्स सी, लेट्स गो बैक, व्हाट इज आर, डेफिनेशन ऑफ आर? You need independent chemical reactions. जैसे हमने देखा था, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, राइट? दिस इज अगेन इक्वेशन ही है, राइट? काइंड ऑफ इक्वेशन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट। अब ये तीन इक्वेशन लिया, तो देयर इज डेफिनेटली अ वे इन विच यू विल फाइंड आउट दैट इफ यू टेक दीज थ्री रिएक्शंस 6, 8 and 9,
आ गया 6, 8 and 9. Okay, I'll leave that as an exercise to you. Now if you look at these three reactions, 6, 8 and 9, now find out whether these three are independent, or can you combine two to get the third one. समझा ना? How will you show it is independent? If you can combine two of these to get the third one, any two of these to get the third one, then that means they are not independent. समझेगा दीक्षिता? सर As an example, मेरे को वे चेक करो, लेट मी नो. एंड आई वांट टू सी कितने लोग ऐसा ट्राई करते हैं और मेरे को बताते हैं कल कि ये तीनों रिएक्शंस इंडिपेंडेंट है कि वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर टू. कितने लोग ट्राई करेंगे ये? आई वांट टू सी हैंड्स. कोई नहीं ट्राई करेगा? सर 6 and 9 कंबाइन करके 8 आता है. वही हो गया ना. सी, because ultimately you're talking about it has to be number of independent reactions. So if you can combine two to give the third one, that means they are not independent. ठीक है? So does that satisfy you, Dikshita? यस सर गॉट इट. ठीक है. और कोई क्वेश्चन है किसी को? So that means these are not independent reactions. ठीक है. There are no other questions. Try to solve those problems 9.50 and 9.51 and see if you are able to get answer. Answer पीछे दिया है book के. You can check, but first solve the problem.